Good morning, this is NJ here. Welcome to English speaking class. Guys, girls, my students, Assalamu alaikum. Today we are going to view the change of voice. Voice means active voice and passive voice. अजीज़ों तुलबा आज हम वॉइस चेंज ऑफ वॉइस देखते हैं। मुख्तलिफ सेंटेंसेस में मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्टिव वॉइस बराह रास्त गुफ्तगू को इंडायरेक्ट वॉइस पैसिव वॉइस में तब्दील किया जाता है और बिलवास्ता गुफ्तगू में तब्दील किया जाता है और हर सेंटेंस में इसके लिए मुख्तलिफ रूल्स हैं और जिनमें से चंद रूल्स हैं। सम रूल्स आर वेरी कॉमन। देयर आर सम वेरी कॉमन रूल्स फॉर मेकिंग चेंजेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। जब हम एक्टिव वॉइस जुमलों को पैसिव में चेंज करते हैं तो कुछ क्वाइज का इतलाक होता है जिन्हें हम अप्लाई करते हुए इनमें चेंजेस करते हैं। टुडे वी आर गोना व्यू द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव पॉजिटिव उसको जुमलों को देखेंगे। माय स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट डेफिनिट फ़िलहाल ज़माने के अफर्मेटिव पॉजिटिव उसको जुमलों को देखेंगे और इन जुमलों से वॉइस की चेंज की तब्दीलियाँ देखेंगे और जो सर्टन चेंजेस हमें करनी पड़ती हैं, पर्टिकुलरली चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी प्लेस चेंज करते हैं और प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में व्हेन वी राइट द सब्जेक्ट इन पैसिव देन वी ऐड इज एज अ हेल्पिंग वर्ब according to the subject, and then the third form of verb is added. The principal verb that I mean is used in active voice। जो बराह रास्त जुमलों में जो वर्ब फेल इस्तेमाल होता है, जब हम पैसिव में उसको लिखते हैं तो उसकी थर्ड फॉर्म लगाई जाती है और थर्ड फॉर्म पैसिव में लगाने के बाद लिखने के बाद बाय लगाते हैं प्रपोजिशन जो कि कनेक्ट करता है। क्वाइल के तहत हमें बाय को ऐड करना पड़ता है और बाय के बाद हम फिर जो है पैसिव वॉइस की जो स्टेटमेंट है सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट मफूल को लिखते हैं। आइए आज हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के मुस्बत जुमलों को देखते हैं। माय स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोना व्यू द पॉजिटिव affirmative sentences in present definite tense and we will make certain changes of pronouns and verb forms as the rules apply. Let's start our lesson behind on the whiteboard. My students, इस whiteboard पे हम अपने सबक का आगाज करते हैं। आइए पहले जुमले को देखते हैं। Let's read out the first sentence। पहला जुमला देखिए, आसिफ writes a poem। आसिफ writes a poem। आसिफ एक नज़म लिखता है। Hey, my student, in this particular statement, Asif is the subject, writes is the verb, and a poem is an object. This is the present definite tense and a positive affirmative sentence. Let's see how it's going to change to passive voice. Here see my students, a poem you see here in passive voice, a poem will come here as a subject because the rules say when we write the passive statement, the subject and object in the active statement replace each other. So a poem will come up here as a subject, a poem, and as we have mentioned that after writing the subject we will add is mr. If the subject is a singular, a poem is a singular subject, then we will add is. We will write here is, and after this we have to write the third form of verb. Principal verb is write and the third form is written. So a poem is written. Now connecting word by is a preposition, by means say and object. This subject in a active voice will come up here as an object. So Asif will stand as it is because it's a proper noun. Proper nouns never going to change except pronouns. So a poem is written by Asif. A poem is written by Asif. This is also a present definite tense but it's in passive form. ये एक पैसिव वॉइस की शक्ल में है, बिलवास्ता गुफ्तगू की शक्ल में है, लेकिन ये भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। A poem is written by Asif. A poem is written by Asif. एक नज़म आसिफ से लिखी जाती है। Here's
my students, our principal statement of sentence is Asif writes a poem. Asif writes a poem. This is an affirmative positive statement in present definite tense. अजीज़ तुलबा, हमने पहला जुमला देखा जो कि प्रेजेंट फेल हाल में है और ये एक मुस्बत जुमला है। आसिफ एक नज़म लिखता है, आसिफ राइट्स अ पोएम एंड देन वी सी इट्स चेंज इनटू पैसिव वॉइस। फिर हमने इसकी बिलवास्ता गुफ्तगू में चेंज देखी और वो चेंज रूल्स को अप्लाई करते हुए, जो कवायद हैं उनको अप्लाई करते हुए हमने इसकी चेंज देखी जो कि आप भी देख रहे हैं। अ पोएम इज रिटन बाय आसिफ। A poem is written by Asif. एक नज़म आसिफ से लिखी जाती है। A poem will stand here as a subject and according to the subject and roles we have to write is, and after is we will write third form of verb, principal verb, that is write, and third form is written. All in passive statements third form of verb is required. माइज़ तुलबा, ये बात याद रखिएगा कि जितने भी पैसिव वॉइस के जुमले होंगे उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर अ पोएम इज रिटन बाय आसिफ। अ पोएम इज रिटन बाय आसिफ। आसिफ विल स्टैंड एज एन ऑब्जेक्ट as because it's a proper noun, so proper nouns will never change by rules. That's why we have Asif as an object here. So new statement in passive is a poem is written by Asif. A poem is written by Asif. एक नज़म आसिफ से लिखी जाती है। This is also a present definite tense, but it's in a passive form, passive voice form. Let's move to the next statement. Here you are, my students. See here, Ben greets the new guest. Ben greets the new guest. Ben greets the new guest. Ben नए मेहमानों को खुशामदीद कहता है। Ben greets the new guest. Ben नए मेहमानों का इस्तकबाल करता है। Greet means to say welcome. So Ben greets the new guest. Ben greets the new guest. Ben greets the new guest. Ben नए मेहमानों का इस्तकबाल करता है। This is also present definite tense. My students, तलबा, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट का एक जुमला है और यहाँ पे जो है Ben जो है ये नेम ऑफ पर्सन। Ben greets the new guest. Ben greets the new guest. Ben नए मेहमानों का इस्तकबाल करता है। Let's move to the passive statement and let's see how the changes here. You see, my students, a passive statement you see here, the new guest will stand as a subject here. The new guest will stand as a subject, and because it's a plural, so we will add are. So new guests are greeted. The third form of principal verb greet is greeted. It's a regular verb. Regular verb are those verbs which have ed in their third and second form. So new guests are greeted by Ben. New guests are greeted by Ben. Now you see here in passive statement, Ben, again we have Ben here as an object because Ben is a proper noun. That's why proper nouns are never going to change. So Ben will stand as it is as an object in this passive statement. The new guests are greeted by Ben. The new guests are greeted by Ben. नए मेहमानों का इस्तकबाल Ben से किया जाता है। The new guests are greeted by Ben. नए मेहमानों का